Hello everyone, welcome back to my channel Study Driven. Today we are going to revise the concept of Accounting Standard 1. So let's start. Revision of Accounting Standard 1. Accounting Standard 1 stands for or refers to disclosure of accounting policies. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का नाम ही है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये बोलता है कि बिजनेस अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हो वो सारे डिस्क्लोज़ करो। कहाँ पे डिस्क्लोज़ करो? नोट्स टू अकाउंट्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये नहीं बोलता है कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी बिजनेस को फॉलो करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, पर ये बोलता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हो बिजनेस अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वो सारे डिस्क्लोज़ करो। कहाँ पे डिस्क्लोज़ करना है? नोट्स टू अकाउंट्स में। Now, what is Accounting Standard 1? What is the context of Accounting Standard 1? Accounting Standard 1 states or it tells that enterprise needs to disclose the significant accounting policies followed by it to prepare and present the financial statement. Accounting Standard 1 ये बोलता है कि enterprise अपने notes to accounts अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये बोलता है कि बिजनेस अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो किए हो वो सारे डिस्क्लोज़ करो। कहाँ पे डिस्क्लोज़ करो? नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज़ करो। और एक और भी बोलता है कि also the manner in which such accounting policies must be disclosed. It tells the manner in which such accounting policies must be disclosed. So accounting standard 1 mainly दो बातें बोलता है। एक तो बोलता है कि disclose the accounting policies in notes to accounts. Secondly बोलता है कि the manner in which this should be disclosed. This accounting policy should be disclosed. Okay. Now why accounting standard 1? What is the need of accounting standard 1? Business को फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है और फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का ज़रूरी होता है फॉलो करना। अब क्या होता है, बिजनेस अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करता है वो बिजनेस का फिनेंशियल स्टेटमेंट को हैम्पर करता है। नॉट हैम्पर, इट इज़ बिजनेस का फिनेंशियल स्टेटमेंट उससे इम्पैक्ट होता है। बैलेंस शीट गेट्स इम्पैक्टेड। बैलेंस शीट इज़ वन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस. So, balance sheet gets impacted by the accounting policies selected by the business to prepare its financial statement, right? So, accounting standard 1, that is disclosure of accounting policy, is required so that balance sheet doesn't get impacted and it presents a true and fair view of the financial statement, right? That is why accounting standard 1 is required. Next is the purpose of disclosure of accounting policies. Why do we need to disclose whatever accounting policy the business is following to prepare its financial statement? What is the purpose? So let us understand it in this way. Financial users use financial statement, right? Financial users use financial statement, and notes to accounts is one of the financial statement. Okay, it's one of the financial statement. ना बिज़नेस को अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है और फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करना होता है और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी बिजनेस फॉलो कर रहा है वो सारे डिस्क्लोज करना होता है नोट्स टू अकाउंट्स में. इट मीन्स द डिटेल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन. Now, if the details of how the financial statement has been prepared is given, then it is obviously it will help to understand and compare. So, better understanding of financial statement and meaningful comparison. It helps the financial users to understand in a better way, better understanding and comparison of financial statement of various company. So, that is the purpose of disclosure of accounting policies. Now, बिज़नेस को चलाने के लिए उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. इट मस्ट प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सर्टेन अजम्पशंस फॉलो करना होता है. दिस आर अज्यूम टू बी फॉलोड एनी वे, राइट. फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सर्टेन अजम्पशंस फॉलो करना होता है और यही सब अजम्पशन का नाम दिया गया है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. दिस आर सच बेसिक अजम्पशंस एंड सच फंडामेंटल अजम्पशंस. द नेम हैज़ बीन गिवन टू देम इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. that they are so basic that they are assumed to be followed anyway.
These assumptions are so basic assumption that they are assumed to be followed anyway, and disclosure is required only if they are not followed. Disclosure of these are required only if they are not followed. They are so basic that they are assumed to be followed anyway. It is assumed that business इसको follow कर ही रहा है. Now there are three of them fundamental accounting assumption. One is going concern, consistency, and accrual. Going concern is what? Going concern concept means it is assumed that business is going to continue itself for next 12 months. Okay. It is assumed that business is going to continue itself for the next 12 months. And there is neither any necessity nor any intention to materially curtail the operation of business. जब कोई भी बिज़नेस चल रहा है तो ये एज्यूम किया जाता है कि कमिंग 12 मंथ्स तक तो ये बिज़नेस चलेगा. ना उस बिज़नेस में कोई इंटेंशन है, ना उसका कोई नेसेसिटी है, ऐसा कोई चीज़ें है अभी कि उस बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जब, तो माना जाता है कि गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है बिज़नेस में. वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज प्रीपेमेंट एंड एक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस. Prepayment and accrual. So a company prepay and accrues its expenses when it believes that it is going to continue itself in near future, right? Otherwise it will not. When the company believes that it is going to continue itself in near future, only then it prepays and accrues expenses. Okay. Now there are some other examples or some scenarios which states when going concern of business is in doubt. Let us take those. If the net worth of the company is negative, that is the capital employed is negative, then the going concern concept of business is in doubt. If the working capital of the company is negative, working capital means the expenses to run the day-to-day business operations. अगर बिज़नेस का वही चलाने का डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन चलाने का खर्चा ही नहीं है बिज़नेस के पास, सो इट इज़ क्वाइट डाउटफुल वेदर द बिजनेस विल बी एबल टू सर्वाइव इटसेल्फ in near future or not, right? Then comes adverse key financial ratios and substantial operating losses, that business has incurred loss itself while operating, that is trading loss. Operating loss means trading loss, and while trading of its while trading of the business, it has incurred loss. So it is quite doubtful that whether it will be go ahead or not. Then negative cash flow from operating activities is that it has incurred negative cash flow from operating activity itself. Then if the business has discontinued giving dividend, then if it has taken any loan, now it is defaulting in repayment of loan. So these are the scenarios when going concern of the entity is in doubt, totally in doubt. And in this such case, what will happen? The auditor will scrutiny this scenarios, and then he will give judgment on this. Next comes consistency principle. Consistency means accounting policy once followed shall be applied consistently from one period to another period. Okay. So now let us take an example for easy understanding. Business अपनी इन्वेंटरी की वैल्यूएशन के लिए फीफो मेथड चूज़ किया है, फीफो मेथड सिलेक्ट किया है. और जब ये फीफो मेथड सिलेक्ट किया है अपनी इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, तो यही माना जाता है कि ये आगे भी यही मेथड को फॉलो करेगा. इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए बिजनेस आगे भी फीफो मेथड को ही फॉलो करेगा. सो दैट इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल इज. इफ द बिजनेस हैज सिलेक्टेड वन accounting policy, then it is assumed that it will continue with the same accounting policy in ahead also. इट कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी. ऐसा नहीं है कि बिज़नेस कभी अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता है, ये चेंज कर सकता है अकाउंटिंग पॉलिसी, बट तभी कर सकता है जब ये इसका एक लॉजिकल रीज़न होगा, जब वो एक मोर फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट होगा. अगर वो चेंज करने से फिनेंशियल स्टेटमेंट और फेयर व्यू देगा तब कर सकता है, या रिक्वायर्ड बाई लॉ है, रिक्वायर्ड बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तभी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल चेंज हो सकता है, मतलब पॉलिसी चेंज हो सकता है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो सकता है. Then comes accrual concept of accounting. Accrual concept here means that companies record their financial transaction. Companies record their financial transaction when they take place. Company record their financial transaction when they take place, regardless of the fact whether the cash transfer has been made for the same or not.
Whenever a transaction has taken place, company will record the same transaction. The cash has been received, cash transfer has been made or not, it doesn't matter. We follow accrual concept of accounting in our while preparing financial statement. Let us take an example of it. Credit sales. Trading account banane ke time, while preparing trading account, in the credit side of trading account we write sales, and we write credit sale and cash sales there, right? Cash sale is normal. We write credit sales too, because credit sale is that sale for which the transaction has taken place but the exchange of money has not yet been there, for credit sales, right? But we still write credit sales because we follow the accrual concept of accounting in preparing financial statement. After fundamental accounting assumptions, then comes accounting policies. What is accounting policy? What is the meaning of it? Accounting policies are the rules and guidelines. क्या होता है, बिजनेस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए उसको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करना होता है. तो वही अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होता है, अब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस होता है. ओके, दैट इज सिलेक्टेड बाय कंपनी इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. अब अकाउंट सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं. क्या होता है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कैसे होता है? जैसे बिजनेस को एक उसका वैल्यूएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन करना है, इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करना है. अब इन्वेंटरी वैल्यूएशन करने के लिए कई ऑल्टरनेटिव्स है. फीफो में कर सकता है, वो वेटेड एवरेज में कर सकता है, या तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में भी कर सकता है. अब बिजनेस क्या किया, कंपनी अपना फीफो मेथड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट किया. अकाउंटिंग पॉलिसी फीफो मेथड सिलेक्ट किया अपना वैल्यू इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. ओके, now for selection of accounting policies, few things should be kept in mind. That is primary consideration. Primary consideration is what? Primary consideration of selecting accounting policy is that whenever a business will select any of the accounting policy to prepare its financial statement, it will keep in mind always that it must result into the fair view of financial statement. मतलब बिजनेस जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेगा, प्राइमरी कंसिडरेशन उसका माइंड में यही रखना है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो प्राइमरी फोकस उसका यही है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करेगा. यही दिमाग में रखते हुए बिजनेस अपना अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेगा प्राइमरीली. सेकेंडरी में क्या चीज़ें रखना है दिमाग में? सेकेंडरी कंडीशन ऑफ सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, दिस थिंग्स मस्ट बी चेक. दैट इज प्रूडेंस, substance over form, and materiality. What is prudence? Prudence tells that provision shall be created for future anticipated losses and not for future anticipated profit. Okay, we practice this concept in preparing financial statement. Now let us take an example so it will be very clear in our mind. While preparing balance sheet, on the asset side we write debtors always, right? Debtors are those to whom we have sold goods on credit, but the money has not yet been received from them, credit sales. Okay, from debtors we deduct PBDD, that is provision for bad and doubtful debts. This is what? This is a provision for future anticipated losses, because provision for bad and doubtful debt is not that who have defaulted their payment. They have not end up defaulting their payment, but rather it is a provision that this much of debtors can default their payment, right? So this is a provision for future anticipated loss. That is a example of prudence concept. Provision for bad and doubtful debt. Next comes substance over form. What do you understand by it? It means transaction recorded in financial statement must reflect their economic substance rather than their legal form. Economic substance here means economic benefit or economic losses, economic benefits or losses, and substance means reality. Reality of economic benefits
And legal form means the legal status of the transaction. Example, let us take an example of substance over form. Let us say that Mr. A purchased a car and he gave it to Mr. B for use. Now, Mr. A purchased it and he is a legal owner. Okay, he is a legal owner, but Mr. B is using it, and by using it, he is earning benefits from it, he is earning income, or if there is any accidents of the car, he is bearing the loss. So the economic benefits, that is the reality of the transaction, that is substance. Economic benefit is to Mr. B, right? But the legal owner, that is the form, is to Mr. A. But so this is a very confusing. This is a very confusing situation. Now, who will record the car as his asset, right? Now here substance over form accounting policy clears our doubt. It says itself in its name, the substance over form. So here substance will win. The whoever is related with the economic reality of the transaction, that will be, so Mr. B here will record the assets in his book, not Mr. A. That is what substance over form is. The last accounting policy of secondary consideration is materiality concept. Financial statements should disclose material items. It tells that financial statements should disclose material items. What are material items? The items, knowledge of which might influence the decision of the financial statement users. Okay. Now let us take an example that business has decided that amount equal to or more than rupees 1 lakh is material to it. Okay, so any amount equal to or more than rupees 1 lakh must be disclosed in the financial statement. That is what materiality concept is. Next comes disclosure. ये स्टैंडर्ड यही बोलता है कि all accounting policies will be disclosed at one place. जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रहा है बिजनेस में फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, वो सारे एक ही जगह में डिस्क्लोज किया जाएगा. दैट प्लेस इज नोट्स टू अकाउंट्स. और ये भी बोलता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन दैट इज गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल वो तभी डिस्क्लोज किया जाएगा जब वो नहीं फॉलो हुआ है, तो अदरवाइज ये डिस्क्लोज करने का कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज दिस इज सच बेसिक्स, इट इज़ अज्यूम टू बी फॉलोड. So this is all about accounting standard 1. We did a quick revision of accounting standard 1. Hit the like button if the video is helpful to you and subscribe to my channel to get regular updates of my videos. Thanks for watching. Have a great day.